गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। 11th फिजिक्स में से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी फिनिश्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 49, so I'll go for question number 50 onwards today. We'll go for question number 50. Let's have a look at this. This is NCERT at fingertips. Okay, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन के सामने। चलिए, आई होप मेरी आवाज़ आप सबको क्लियरली आ रही है। आई होप मेरी आवाज़ आपको सबको क्लियरली आ रही है। Okay, let's begin with this now. This is question number 50. I'll call this as a half star problem. Okay, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। It's a nice question this is. ठीक है। Now before I proceed further, यहाँ पर मैं कुछ नोट में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। It's note about the springs. Springs के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। It's a note about the springs. Now the springs, first part, springs in parallel. Springs in parallel, एंड दूसरा पार्ट होगा स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग्स इन सीरीज, बाय द वे कल जो लेक्चर हमने देखा था, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के बारे में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज मेंट बाय द फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपको याद होगा, कल का लेक्चर में शुरुआत ही मैंने करी थी इसके साथ। ठीक है, शुरुआत नहीं, मेरे ख्याल से आगे एक क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन रहा होगा शायद, या इट वाज द लास्ट क्वेश्चन जहां पर मैंने स्प्रिंग के बारे में डिस्कस किया था। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय k. If k is the stiffness of the spring, then it is the force per unit deformation. It is the force per unit deformation, so it is F upon L. उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, so k is the force constant, or we also call that as the stiffness of the spring. Now I consider a situation where there are two springs in parallel. जैसे कि सपोज यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है और इसी प्रकार का और एक स्प्रिंग है, but both these springs they are in parallel. ठीक है, ये springs parallel में है and they are supporting a mass here. The mass is m. This spring has constant k1, spring stiffness constant, and this is k2. ठीक है, and they are connected to the rigid support. अब यहाँ का जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है, यहाँ का जो इक्विवेलेंट k in parallel is equal to k1 plus k2. You will accept this without proof. ये जो रेजिस्टेंसेस होता है इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है स्प्रिंग्स के लिए। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज होते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर एक चीज कंसिडर करूँ कि भाई देखो ये ऐसा है एंड देयर आर टू स्प्रिंग्स वी कंसिडर, वेल आई विल कंसिडर हियर टू स्प्रिंग्स। ये एक स्प्रिंग है, ये समझो कि दो स्प्रिंग्स है वहां पे, फर्स्ट स्प्रिंग और यह है दूसरा स्प्रिंग। नाउ दीज आर द स्प्रिंग्स इन सीरीज। और अगर यहाँ पर एक मैं मास लिख दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, सपोज दिस इज द मास m, दिस इज k1 एंड दिस इज k2। सो यहाँ का जो k सीरीज है 1 upon k series is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2. Is this clear? We will accept this formula without proof. So this is note about the springs in parallel and the springs in series. Is that clear? ठीक है, this is the note about the springs in series and springs in parallel. इस question में they are talking about the springs which are in series. So I have to apply this formula here. ये formula मुझे यहाँ पर apply करना पड़ेगा. So we will remember this formula as the standard formula. हम ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तौर पर इस फॉर्मूले को रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? चलिए, सो आगे चलते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर नोइंग दिस फैक्ट्स अबाउट द स्प्रिंग्स,
और मेटल वायर ऑफ लेंथ, अब कई बार जो वायर होता है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि लोड जब अप्लाई किया जाता है वायर को, तो वायर इलोंगेट्स, वायर जो होता है उसका इलोंगेशन हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, तो इसलिए वो एक स्प्रिंग की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L1, metal wire of length L1, cross sectional area A is attached to the rigid support. Okay, another metal wire of length L2 and the same cross sectional area. तो यहाँ पर बेसिकली दो वायर्स कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, दोनों का एरिया सेम ही है L2 and area is same A, area is A. Attached to the free end of the first wire, a body of mass m is then suspended from the free end of the second wire. If y1 and y2 are the Young's moduli of the wires respectively, the effective force constant of the system of two wires is, ये दो वायर जब यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं, देखिए गौर से, क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर टू वायर्स विच आर कनेक्टेड। चलिए कोई नहीं, आई विल जस्ट शो इट हियर। दिस इज द फर्स्ट वायर, ओके, और वहाँ पर दूसरा वायर भी है of the same cross section, लेकिन different length, ठीक है। The first wire is L1 and area A, the second wire is L2 area A, and their Young's moduli are Y1 and Y2 respectively. What is the stiffness constant, isn't it? The effective force constant, दोनों का मुझे force constant चाहिए। तो by the way, अगर मैं formula apply करूँ, what is y is equal to, the formula says y is equal to Young's modulus F L upon A L, ये है, okay. Now what will be the force constant F upon L? Therefore the force constant F upon L, that is K, is equal to YA is equal to is equal to is equal to YA upon capital L. Well, we will use this as a standard formula, ये एक फॉर्मूले की तरह हम दोनों के लिए भी यूज करेंगे। तो लेट अस अप्लाई दिस फार्मूला फॉर द फर्स्ट वाला, पहला जो वायर है उसके लिए अगर हम अप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल बी K1 इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस K1 इज इक्वल टू Y1A अपॉन L1, और इसके लिए होगा K2 इज इक्वल टू Y2A अपॉन L1, ठीक है, दे आर कनेक्टेड। यहाँ पर उसको एक मास M लगा दिया है, दिस मास इज M, दिस मास इज M, isn't it? अब इन दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, अगर वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं दोनों के दोनों वायर्स, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज वाला थिंग, सीरीज वाला जो है इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट के सीरीज 1 अपॉन के सीरीज is equal to 1 upon k, oh, sorry, 1 upon k1 razor is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2, इसका रेसिप्रोकल होगा L1 अपॉन Y1A प्लस L2 अपॉन Y2A। चलिए मुझे यहाँ से 1 अपॉन A कॉमन आएगा, और इधर आएगा L1 Y2 प्लस L2 Y1 डिवाइडेड बाय Y1 इंटू Y2, ओके, ये होगा। Now that is nothing but 1 upon K series, and therefore what is the effective force constant K series is equal to A Y1 Y2 divided by L1 Y2 plus L2 Y1. Well, this would be the answer. Is it matching with any of the options? Please check. I think Y1 Y2 A, L1 Y2, so it is matching with option C. Is this clear to you all? Is this clear to you all?
एंड दैट इज हाफ स्टार प्रॉब्लम। ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन इतना सिंपल और ये आसान भी नहीं है, तो इसके लिए मैंने इसको हाफ स्टार बोल दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। कैन यू हियर मी प्लीज? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी प्लीज? Yes, sir. ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So that was question number 50. I'll go for question number 51, which is a numerical now, based on, of course, Young's modulus. Question number 51 देखिए. The area of cross section of the steel wire. The area of cross section of the steel wire is 0.1 centimeter square, and Young's modulus of the steel is 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. The force required to stretch F पूछा है by 0.1% of its length. Extension is 0.1% of its length is 0.1% of length मतलब कितना होगा रे? 0.1% of length मतलब it is 0.1% of the length. बताइए. So basically this is L upon L is 0.1%, that is equal to 0.1 upon 100. Please understand this. And that is equal to 1 into 10 raised to minus 3 L upon L. फॉर्मूला बोलता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस F अपॉन A अपॉन स्ट्रेन L अपॉन कैपिटल L. ठीक है, विच गिव्स यू FL. यहाँ पर तो मुझे ये L अपॉन L पता है. आई नो दिस L अपॉन L. I know the area. I know Young's modulus. I have to find out the force. Okay. Now here I will say this is equal to 0.1 into 10 raised to minus 2 का square minus 4 meter square, or it is 1 into 10 raised to minus 5 meter square. So यहाँ पर ये बन जाएगा, this will become y into L upon capital L is equal to F upon A. Therefore this F is equal to y L A upon capital L. Therefore F is equal to y कितना होगा? 2 into 10 raised to 11. L upon capital L is 10 raised to minus 3 and area is 10 raised to minus 5. तो कुल मिलाकर फोर्स नीडेड इज इक्वल टू 2 into 10 raised to 538 8311 न्यूटन, that is equal to 2000 Newton. So this was a very simple straightforward question based on the formula substitution and answer. I hope this is clear to you all. Okay, I'll go for the next question. Question number 52. Question number 52. Please have a look at this. This is again based on the Young's modulus. Question number 52. Are you all able to hear me properly? क्या आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Please answer. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this is a half star problem. Let me tell you, this is a half star problem. ठीक है? Again, this is based on the formula substitution and answer. लेकिन देखते हैं थोड़ा सा conical pendulum अगर आपको याद होगा. Do you remember the? I'll explain here what is called as note conical pendulum. Conical pendulum याद है आपको? सर्कुलर मोशन में आपने देखा था ये कोनिकल पेंडुलम. यू हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन सर्कुलर मोशन. ठीक है. नाउ लेट्स सी हियर कि भाई अगर एक स्ट्रिंग है
Hmm. Now we consider here, this is the string और इस string के end को एक mass attach किया है, ठीक है. This mass is having, the mass is m, okay, and this is whirled in the horizontal circle like this, okay. The length of the string is L. L is the length of the string, ठीक है, and the angle made with this by the string with the vertical is theta. Now because of which there will be the tension in the string. इस tension string के अंदर कुछ tension होगा. This tension is acting in this direction. You see, इस तरह से वो act करेगा. This is the tension in the string, isn't it? And moreover, there is weight which is acting vertically downwards. वहाँ पर उसका जो weight होगा वो act करेगा vertically downwards. So let me show this weight. Weight मतलब mg. So this is acting vertically downwards like this. This is mg. Any doubts so far? ठीक है. अब ये जो weight है, इस weight को मुझे resolve करना पड़ेगा. I'll have to resolve this weight in this way along the length of the string and perpendicular to the length of the string. ऐसे इससे मैं इसको रिजॉल्व किया है मैंने इसको. नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा. सो दिस इज एंगल थीटा ओनली, ओके. और ये रहा थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट और ये रहा थीटा का सामने वाला कंपोनेंट. सो क्या होंगे कंपोनेंट्स बता दीजिएगा. दिस इज गोइंग टू बी एम जी कॉस थीटा and this is going to be mg sin theta, isn't it? Right. तो इस तरह से ये कंप्रेशन है. नाउ टेंशन इज इक्वल टू mg cos theta because this is the equilibrium position, so this tension is balanced by mg cos theta. I hope this is clear to you all. So I'll say here T is equal to mg cos theta, tension, and this tension itself is the force acting here. इस टेंशन की वजह से ही ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा अभी से. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. बराबर है क्या. इसकी वजह से ही वो स्ट्रिंग जो है वो खींच जाएगा. चलिए तो देखते हैं अब. तो यहाँ पर आई वुड से व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस फॉर दिस मटेरियल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल. इसमें से ये रहा एफ, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. मुझे चाहिए यहाँ पे, अब ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया. लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. अ स्टोन ऑफ मास m tied to one end of the wire of length L. The diameter of the wire is D and it is suspended vertically. The stone is now rotated in the horizontal circle and makes an angle theta with the vertical. So it's exactly the conical pendulum. If the Young's modulus of wire is y, then increase in the length of the wire. मतलब basically मुझे L का value चाहिए. L is the extension or increase in the length. So I'll substitute this. I'll put it in this way. L is equal to FL upon AY. FL upon AY, and therefore L is equal to force. I already know it is mg cos theta. It is mg cos theta. Length is L and area cross sectional area होता है and this area is given by pi by 4 d square. क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मुझे diameter दिया है. They have specified here the diameter of the wire, so that's fine. So I'll just substitute here. This will become pi by 4 d square into y. अब ये 4 ऊपर चला जाएगा and ultimately what will be the answer there. The answer is given by 4 mg L cos theta divided by 4 mg L. मुझे चाहिए force ना. Ft is equal to mg cos theta. Yeah, that's correct, isn't it? एक second. T, वेट कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे. जस्ट होल्ड. गड़बड़ ये हो गया है कि मुझे mg को मैं नहीं t को मैं कर सकता हूँ. ये होल्ड ऑन प्लीज. देयर इज लिटिल मॉडिफिकेशन दैट हैज टू बी डन. ये जो mg है उसको मुझे वर्टिकली रखना पड़ेगा. प्लीज चेक हियर. देयर इज लिटिल मॉडिफिकेशन. मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा. होल्ड ऑन. व्हाट आई विल डू इज आई विल रिजॉल्व दिस टेंशन
क्योंकि टेंशन को रिजॉल्व अगर करते हैं हम, आई रिजॉल्व द टेंशन इंस्टेड ऑफ, तो ये रहेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नाउ व्हाई द रीजन इज, ये एंगल थीटा होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी टी cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा एंड दिस इज t sin थीटा, this is t sin theta which is actually giving me the centripetal force. ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको यूज करूंगा. सो t cos theta is mg. I'll just modify this part. ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ. This has to be modified. I'll write this as t cos theta is equal to mg and therefore t is equal to mg upon cos theta हो जाएगा, which is nothing but the force acting on that. So ये जो force acting है, ये जो force acting है, this force acting nothing but this one. It is this clear to all? तो इसलिए इस फोर्स के जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, mg अपॉन cos थीटा. फोर्स इज इक्वल टू mg अपॉन, ये जो cos थीटा इधर नहीं रहेगा बल्कि वो इधर चला जाएगा, mg अपॉन cos थीटा एंड आई जस्ट इरेज इट फ्रॉम हियर. So what do we get there? This will give me, I'll just modify and write the final answer here. This will become 4 mgl, 4 times mgl upon pi d square y cos theta. Pi d square y cos theta, C is the answer. Is this clear to you all? Is this okay? Is that clear? It's a half star problem. यहाँ पर हमें conical pendulum के जो basics है उसको थोड़ा सा refresh करना पड़ता है. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Hello, is this okay? Hello, is this okay? चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं. Let me go for the next question. Are you all there on the line, please? Yes, अगला sir. question. अगला question we go for question number 53. Question number 53. It's a nice question once again. बहुत अच्छा question है ये. Question number 53. When the load on the wire is increased from 3 kg weight to 5 kg weight. पहला लोड कितना था उसका, W1 the load, या फिर इसको मैं F1 बोलूँगा. Okay, F1. The load on the wire is 3 kg weight. One second. The load on the wire F1 is equal to 3 kg weight. 3 kg weight मतलब है 3 into G. 3G. 3 into G. I'll call it as 3G. What was the extension? The extension produced, the elongation increases from 0.61 millimeter और दूसरा लोड जो दिया है उन्होंने दिया है 5 kg वेट. 5 kg का वेट कितना होगा, mg मतलब 5 into g. ठीक है, दिस इज F2 and the extension is L2 is equal to 1.02 millimeter. This is okay. The required work done during the extension of the wire is, अब इसकी वजह से the wire is extended. ठीक है, the wire is extended from this to this. अब इसके पहले आप मुझे बताइए कि भाई इस वायर के ऊपर अगर कोई लोड था ही नहीं जब, that means when F was 0 the extension was 0. So this is the initial position. I can call this as the initial position. I can call this as the initial position. और इस पोजीशन से फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको खींचा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको खींचा. फोर्स 1, एक्सटेंशन 1 L1 एंड वर्क डन इज W1. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से उन्होंने उसको फर्दर भी खींचा, ऐसे यहाँ तक खींचा. सो दिस इज फोर्स 2, extension L2 and the work done is W2.
और ये है W which is actually W2 minus W1 और ये हमको पूछा गया है. Now by the way, the work done in stretching the wire is equal to क्या होता है? Work done in stretching the wire is equal to half into load into extension. I hope you remember this formula. I hope you remember this formula. तो मुझे यहाँ पर बस दोनों को subtraction करना है W2 minus W1. So the work done in this case is equal to a half into F2 L2 minus half into F1 L1. That is equal to half ब्रैकेट में आएगा F2 L2 minus F1 L1. Isn't it? Now that will give me what? That is equal to half into F2 is अब पहले तो मुझे इसको SI यूनिट में लिखना पड़ेगा. So this will become 0.61 10 raised to minus 3 6.1 into 10 raised to minus 4 मीटर और ये हो जाएगा 1.02 10 raised to minus 3 that is 0.102 into 10 raised to minus 4 मीटर. इस तरह से हो गया ये. So just need to substitute here now. What is this going to give me? F2 is 5G into 0.102 into 10 raised to minus 4 minus F1 L1. F1 is 3G into 6.1 into 10 raised to minus 4. चलिए यहाँ से अब हम कुछ कॉमन लेंगे. We'll take something common from here. This will be giving me G into 10 raised to minus 4 upon 2 and that is equal to इसको multiply कीजिएगा. This will become plus minus 3 से multiply कीजिएगा यहाँ पे. This will give me 3 एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया मैंने शायद. 0.61 into 10 raised to minus 3. hold on. मैं इसको दोबारा लिखूंगा. Write this as इसमें गड़बड़ किया शायद मैंने. Let me write this as 0.61 into 10 raised to minus 3 meter and this is 1.02 into 10 raised to minus 3 meter. L2 is 1.02 into 10 raised to minus 3 and this is 0.61 into 10 raised to minus 3. चलिए कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे. क्या आएगा कॉमन बताइए. I'll multiply this once again. G कॉमन आएगा बाहर. हाफ बाहर आ गया है. 10 raised to minus 3 बाहर आ गया है. minus 4 नहीं, it's minus 3. this is minus 3. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? Because below the half minus 3 6 3 by 18. So it's 5.10 minus 1.83 7 2 3.27. So this will be, I'll take G is equal to 10. मैं G is equal to 10 ही ले लूँगा और G is equal to अगर अब मैं 9.8 ले लूँ 9.8 में I'll take 10 only. Forget about that. So 10 into 10 raised to minus 3 is 10 into 10 raised to minus 2 10 raised to minus 2 into 3.27 upon 2. So that will be 2 1s are 6 are 3 are 5 into 10 raised to minus 2 joule. This is the work done. It is measured in joule. So that's the answer. The answer is 1.6 into 10 raised to minus 2. So I have 10 raised to minus 2 or I can write it as 16.35 into 10 raised to minus 3 joule. Well, this is the answer. Yeah. And this is the answer. C is the answer. A is the answer here. Is this clear to all?
is the answer. Is that okay? Is that clear? Okay. Question number 54. Question number 54. Let's see. Again, this is a half star question. Again, this is a half star question. क्या दिया है यहाँ पे? इफ द रेशियो ऑफ, यहाँ पे दो वायर्स है एक दूसरे को ऐसे लगाए हैं. अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब वायर एक के पीछे एक लगाए हैं इस केस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दिस इज द स्टील वायर कनेक्टेड टू 2m mass, उसके बाद brass wire and again 3m is the mass. So can you tell me what is the force acting, what is the force which is acting on the brass wire? Brass wire को खींचने वाला force कितना है? I'll call this as FB. What is the force acting? It is 3mg, क्योंकि brass wire को खींचने वाला इतना ही force है, whereas the force which is pulling down the steel wire is equal to 3 plus 2 5mg. I hope this is clear to you all. 3 plus 2 5mg. Any doubts about that? ठीक है, ठीक है. Now the extension, total extension in this case is equal to extension of the steel wire plus extension of the brass wire. इसके विपरीत अगर दोनों मास एक के बाद एक अगर लगाए जाते हैं वायर्स और यहाँ पे 2m नहीं होता तो दोनों के लिए फोर्स सेम ही होता. Now in this case they say that the ratio of diameters, lengths and Young's moduli of steel and the brass wires are in the given figure are P, Q and R respectively. So the ratio of diameter of steel wire to diameter of brass wire, this ratio is P. The length of steel wire to length of brass wire is equal to Q, and Young's modulus of steel wire, Young's modulus of brass wire is equal to R. Okay, then the corresponding ratio of increase in their lengths would be, so I want to find out ratio of increase in the length of steel wire to the brass wire is what? Is the question clear to you all? समझ में आ गया? Generally I'll write the formula here. Y is equal to FL upon area of cross section is pi by 4d square. Pi by 4d square, this is area of cross section into L. In short, this is Young's modulus is equal to 4FL upon pi d square L. And I want to find out what is the extension. So extension L is equal to 4FL upon pi d square y. 4FL upon pi d square y. I want the ratio of extension of the steel wire to extension of the brass wire. तो बस ये सब्स्टिट्यूट करना है दोनों के लिए. So this will become 4f for steel wire, length of steel wire divided by pi diameter of steel wire into Young's modulus of steel wire divided by 4f for brass wire, L for brass wire upon pi times diameter of brass square into Young's modulus of brass wire. अब इसमें से क्या कैंसिल होगा? 4 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा. ओके, और क्या कैंसिल होगा यहाँ पे? बाकी अब मुझे यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा तरीके से. सो दैट इज इक्वल टू, इट विल बी एफ एस एल एस अपॉन एफ बी एल बी. ये तो ऐसे ही रहेगा और ये जो है ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बिकम डी बी स्क्वायर वाई बी डिवाइडेड बाय डी एस स्क्वायर इंटू वाई एस. इज दैट क्लियर?
Now, therefore, extension of steel wire upon extension of brass wire is equal to, let me substitute here, Fs. What is the force acting on the steel wire? It is 5 mg divided by force acting on the brass wire is 3 mg into Ls upon Lb is Q, dB upon ds. dB upon ds is 1 upon P, so it will be 1 upon P ka square into Yb upon Ys is 1 upon R. Now this gets cancelled. This gets cancelled. So the required ratio is 5Q upon 3P square R. 5Q upon 3P square R. So this is the answer. Is this clear to all? B is the answer. Any doubts about this? Any doubts about this? Any doubts about this? Hello? Is this clear to all? Yes, sir. Okay. I'll go for the next question now. I'll go for the next question now. Question number 54 के बाद question number 55. Yeah, this one. What's given here? A copper wire of length 2 meter. A copper wire of length 2 meter, sorry 2.4 meter. Length of the copper wire 2.4 meter and a steel wire of length 1.6 meter. Both of diameter. Diameter is same 3 millimeter. Are connected end to end. 3 into 10 raised to minus 3 meter. When stretched by a load, the net elongation is found to be the total elongation. अब ये end to end connect किए गए हैं. End to end connect किए गए हैं मतलब just like this. आ गया. ये जो question था इस तरीके से उनको connect किया गया है. They are connected like this. They are connected end to end. तो उसमें से एक है कॉपर वायर दूसरा है स्टील वायर. लेट्स से दिस इज द कॉपर वायर एंड दिस इज द स्टील वायर. तो दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है. व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द लोड द नेट इलोंगेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा total elongation is the elongation of copper wire plus elongation of the steel wire and that is equal to 0.7 millimeter. The load applied is, तो उनको F पूछा गया है यहाँ पे. ये जो F होगा that is asked. What is the force acting over there? Is the question clear to you all? Question सबको समझ में आ गया? Y for copper wire, Young's modulus for copper and steel wire are given to us. Young's modulus for both are given to us. Now in this case जब वो end to end connect किए गए, एक चीज जो बहुत important आपको याद रखनी पड़ेगी, that is the force acting on the copper wire is same as that of the force acting on the steel wire. दोनों के ऊपर जो force है वो same ही रहेगा. Is this clear? ठीक है? They are same. So what is the load applied there? They are asking. अब उनका डायमीटर भी सेम है. डायमीटर सेम है इसका मतलब क्या है? उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है. Isn't it? So दोनों को अगर मैंने A से डिवाइड किया, that means दोनों के अंदर सेम stress, tensile stress on copper wire is same as that of stress on steel wire. Stress is same on both the wires. Is this okay? Is this okay? Isn't it? Now we know the formula that stress
upon strain is equal to Young's modulus, and therefore stress is equal to Y into strain. Stress is equal to Y into strain. So this will become Y for copper wire into strain for copper wire is elongation of the copper wire upon total length of the copper wire is equal to Y for steel wire, elongation of steel wire upon length of the steel wire. Is this okay? Let me just substitute now. बस मुझे इसको substitute करना पड़ेगा. So Y for copper wire is 1.2 into 1.2 into 10 raised to 11 length of the copper wire divided by elongation of the copper wire. Length of the copper wire is 2.4 meter is equal to Y for steel wire. It is 2 into 10 raised to 11 into length of the steel elongation of the steel wire divided by length of the steel wire. So this is 8 2s are 16 and 8 3s are 24. Okay. So now this will give me length of the copper wire is equal to 10 raised to 11 तो cancel हो जाएगा. So this will become 2 upon 1.2 length of the steel wire और ये भी यहाँ पर upon 3 होगा and upon 2 होगा. ये 2 gets cancelled. So this will become length of the copper wire is 3 upon 1.2 or 30 upon 12 times length of the steel wire. This gives me length of the copper wire is equal to 2.5 by 2 times length of the steel wire. That in turn gives me length of the copper wire is 2.5 times length of the steel wire. I want the ratio or the exactly f चाहिए मुझे वहाँ पे. Okay. तो इसमें अगर मैं substitute करूँगा, I will solve this equation. This is the first equation and this is the second equation. I will solve both the equations simultaneously. दोनों equations को अगर मैं simultaneously solve करूँगा, if I solve both these equations simultaneously, तो copper wire के जगह पर मैं लिखूँगा 2.5 times the length of the steel wire plus length of the steel wire is equal to 0.7 millimeter. 3.5 times length of the steel wire is equal to 0.7 millimeter. So length of the steel wire is 0.7 upon 3.5 millimeter. That is equal to कितना आएगा ये 7 upon 35 millimeter 1 upon 5 millimeter 0.2 millimeter. This is the elongation of the steel wire. Accordingly, I can find out therefore what is the elongation of the copper wire. ये 0.2 millimeter तो ये 0.5 millimeter होगा क्योंकि दोनों का addition is 0.7 millimeter. चलिए मुझे ये तो मिल गया. अब मेरे ख्याल से इससे मुझे what is the load acting because I know that the Young's modulus is equal to FL upon AL. इसमें से मैं किसी को एक को भी अप्लाई कर सकता हूँ. If I apply it for the steel wire, अगर ये steel wire के लिए होगा, then the force acting here the steel wire is equal to YAL upon L. This is all for steel. Now that is equal to Young's modulus for steel wire. कितना होगा 2 into 10 raised to 11 2 into 10 raised to 11 into area of cross section 3 millimeter. So pi by 4 d square 3 millimeter का square 9 into 10 raised to minus 6 का 3 का 6 and extension is 0.2 millimeter. This will become 2 into 10 raised to minus 4 and whole thing divided by length. Total length कितना है उसका 1.6 millimeter 1.6 meter 1.6. तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है. So this will give me force on the steel wire is equal to देखिए क्या होगा. This will become 2 and 4 gets cancelled. This will become 9 pi upon 1.6. 9 pi is 3.14
अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर्स देखिए, 6 4 10, 11 माइनस 10 इज 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम लाइक 900, यहाँ का जीरो यहाँ का जीरो इंटू 3.14, नहीं तो एक जीरो यहाँ पर दे दो, 31.4 बना दो अपॉन 16, 16 वन जा 16 वन जा 15 बचा 1.154, 9 जा, दिस इज ऑलमोस्ट 32, तो इसको मैं ऑलमोस्ट 2 ले लूंगा। So this means 90 into 2 is 180, 180 Newton. The force which is there is 180 Newton, that is 1.8 into 10 raised to 2. 180 Newton, 1.8 into 10 raised to 2 Newton. So that is option B. Option B is the answer. B is the answer there. Okay. In question number 55, in question number 55, the related question it is. In question number 55, the ratio of elongation of steel to copper wire is, ये अभी हमने already find out किया है, the ratio of elongation of steel to copper wire we already found out it to be 5:2। तो देखिए यहाँ पर हमने already इसको find out कर लिया है, LC upon LS, LC upon LS is 5:2 या 2:5, so 5:2, elongation of steel to copper, LC upon LS is 5:2, and therefore LS upon LC is 2:5, and the option is B. B is the answer there. Question number 58. Question number 58. Young's modulus of wire of length L, radius R is Y. If length is reduced to L by 2, oh, radius is R by 2, the Young's modulus will be. Young's modulus is the property of the material, वो उसके dimension पर depend नहीं करेगा. Young's modulus is the property of the material. This is the property of material. तो वो dimensions के ऊपर नहीं depend करेगा. Okay, जैसे boiling point, melting point, these are the properties. तो उस वजह से the Young's modulus will be same. 58. Question number 59 देखते हैं. Question number 59. क्या दिया है यहाँ पे? A copper and steel wire of the same diameter. A copper and the steel wire of the same diameter are connected end to end, just like the previous problem. A deforming force F is applied to this composite wire. Force भी same ही रहेगा अगर वो end to end connect किए हैं तो. Which causes the total elongation of 1 centimeter. That means LC plus LS is equal to 1 centimeter. Okay, the two wires will have, दोनों वायर्स का फोर्स सेम है और डायमीटर सेम है, दैट मीन्स दिस विल हैव द सेम स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर. एरिया सेम होगा, स्ट्रेस सेम होगा, सो दे विल हैव द सेम स्ट्रेस. लेकिन दोनों का यंग्स मॉड्यूलस डिफरेंट है. यंग्स मॉड्यूलस डिफरेंट है. नो यू नो दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू द यंग्स मॉड्यूलस. सो स्ट्रेस सेम होगा लेकिन स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस अलग है तो स्ट्रेन भी अलग ही होगा दोनों का. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? दे विल हैव द सेम स्ट्रेस बट डिफरेंट स्ट्रेन. सो बी इज द आंसर देयर. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई बात ये सबको? क्योंकि स्ट्रेस सेम होगा
लेकिन बीइंग द डिफरेंट मटेरियल y अलग होगा तो स्ट्रेन भी अलग ही होगा, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो दोनों का अगर y अलग होगा तो स्ट्रेन भी अलग होना चाहिए, सो दैट दिस कॉम्बिनेशन स्ट्रेस विल बी सेम। सो दैट्स द आंसर। इज दिस अंडरस्टूड? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर? हेलो, क्वेश्चन नंबर 62। I'll go for question number 62. ठीक है? Are you all there on the line? Can you hear me properly? Question number 62. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62. Yeah. Again, I'll call this as a half star problem. इसे मैं half star problem कहूँगा। चलिए क्या दिया है? The length of the rubber cord is L1 meter when the tension is 4 Newton. Tension F1 is 4 Newton. The length of the rubber cord is L1. When the tension is 6 Newton, the length of the rubber cord is L2. Let me say that when the tension is 0, the length is L. हम इसको बोलेंगे the tension is 0 when the length is L. Isn't it? ठीक है? F1, F2. The length, I have to find out when the force or the tension is 9 Newton. What will be the length? ये चाहिए मुझे। तो let us say this L, let me call this as unstretched length. Unstretched length को मैं capital L बोलूँगा. Sorry. Let me call this as capital L. We call this as unstretched length. We call this as unstretched length, capital L. Isn't it? तो यहाँ पर ये जो L1 है इसमें इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा? लेट मी कॉल द डिफॉर्मेशन हियर इन दिस केस, जो कि डिफॉर्मेशन होगा, द डिफॉर्मेशन let me call the deformation as delta L1 is equal to the total length minus the unstretched length, whereas यहाँ का जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा delta L2 which is equal to total length minus unstretched length, और यहाँ का डिफॉर्मेशन होगा delta L3 which is equal to total length माइनस अनस्ट्रेच लेंथ। लेकिन मुझे ये तो मुझे नहीं है फिलहाल, सो इसको मैं फिलहाल नहीं लिखूंगा। ठीक है, आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू नाउ, राइट नाउ आई टॉक अबाउट दीज टू। ठीक है, सो दिस विल गिव मी चलिए, नाउ व्हाट विल बी द यंग्स मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। इसकी परिभाषा में लिखे तो ये एल जो है इसके जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा एल, इसके जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा एल, FL upon A delta L. Is this okay? Now the same rubber cord is there, so मैं इसको लिखूंगा if Y is equal to FL upon A delta L for the first part, first case is equal to FL upon A delta L for the second case is equal to FL upon A delta L for the third case. For the third case. For the third case. तो बस मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस करते हैं सब्स्टिट्यूट। एफ इज 4 न्यूटन फर्स्ट केस, उसका टोटल इनिशियल लेंथ तो सेम ही रहेगा, तो ये तीनों जगह से एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया is also mentioned to be the same, so area will also get cancelled यहाँ पे। now delta L1 is nothing but L1 minus L is equal to second case 6 Newton, this is L2 minus L is equal to 9 Newton upon L3 minus L। मुझे चाहिए लेंथ, टोटल लेंथ चाहिए मुझे इसका L3,
पहले मैं ये दो इक्वेशंस सॉल्व करना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल I'll talk about these two equations. One second. ये दो इक्वेशंस मैं क्लब करूंगा. मुझे क्या मिलेगा? 4L3 minus 4L is equal to 9L1 minus 9L. And if I club these two equations, तो क्या मिलेगा मुझे? 6 times L3 minus L is equal to 9 times L2 minus L. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 2L3 minus 2L is equal to 3L2 minus 3L. And so what is this going to give me? 3L2, L3, L3, L3. I want to eliminate L1, L2 मुझे eliminate करना पड़ेगा. I'll have to solve this simultaneously. No? L3 मुझे चाहिए and इसमें से मुझे L eliminate करना है. यहाँ से मुझे L मैंने introduce किया था. So what I'll say here is 5L is equal to 9L1 minus 4L3. This is equation 1. ये बन जाएगा L is equal to ये minus 3L इधर आके बनेगा. ये minus 9L इधर आ गया तो 9L minus 4L is 5L और ये 4L3 उधर गया तो माइनस हो जाएगा. minus 3L इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. So I'll send this here and send this over there. So 3L minus 2L is L is equal to 3L2 minus 2L3. Now this is equation 2. यहाँ से मैं L के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा. सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम दिस ओवर देयर. तो ये बन जाएगा 5 times 3L2 minus 2L3 is equal to 9L1 minus 4L3. Now this will give me 5 3 is 15L2 minus 10L3 is equal to 9L1 minus 4L3. Now that will be nothing but ये L3 उधर चला जाएगा. So this will become 15L2 minus 9L1 is equal to 10 minus 4 is 6L3. 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 5s are. Divided by 2 also. So what will be L3 is equal to? L3 is equal to 2.5 L2 minus 1.5 L1. So this will be the answer. 2.5 L2 minus 1.5 L1. 2.5 L2 minus 1.5 L1. So A is the answer. I think this is a star problem. दो इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. इसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं था. नंबर सिर्फ ये था. बाकी L1, L2, L3 के फॉर्मेट में मुझे इसको सॉल्व करना था. इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आपको, लेकिन दैट वे इट इज इजी. यू जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर्म टू इक्वेशंस और टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. दैट्स द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट ओके? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग टॉट? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? शाबाश. Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 62. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ. इट्स अ स्टार प्रॉब्लम. Question number 66. It's a star problem. This is a star problem. चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. पहले एक डायग्राम दिया है यहाँ पे.
ये डायग्राम दिया है। ओके, क्या दिया है यहाँ पे डायग्राम में? व्हाट आर दे सेइंग हियर? यहाँ पर अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है। ये जो दिख नहीं रहा है, वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए है। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस प्रकार होगा, जो कि इसके अंदर की तरफ होगा, ऐसा ऐसा। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। तो ये रहा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। आई होप दिस इज क्लियर। A bar of cross-sectional area A is subjected to two equal and opposite tensile forces at its ends as shown in the figure. Hmm? Consider the plane BB dash, ये रहा एक plane BB dash, making an angle theta with the length. Okay, the ratio of tensile stress to shearing stress on the plane BB dash is. तो अब मुझे क्या करना है, ये जो फोर्स है गौर से देखिए, just look at this carefully now, ये जो फोर्स होगा, let's show this force over here, this force, ये जो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इससे मैं रिजॉल्व करूंगा। आई रिजॉल्व दिस फोर्स, आई रिजॉल्व दिस फोर्स परपेंडिकुलर, इस तरह से। आई रिजॉल्व दिस फोर्स परपेंडिकुलर एंड one component will be along this, ऐसा रहेगा। अब देखिए, ये है एंगल थीटा, बराबर है क्या? तो ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, मतलब दिस कंपोनेंट जो होगा, व्हाटएवर दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी एफ साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो एडजेसेंट कंपोनेंट है, सो दिस इज गोइंग टू बी एफ कॉस थीटा। इसकी वजह से ये जो है, दिस इज कॉजिंग द टेंशन, इसकी वजह से यहाँ पर टेंसाइल, दिस इज कॉजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस विल कॉज द टेंसाइल स्ट्रेस। और ये जो है इसकी वजह से होगा उसका shear स्ट्रेस, क्योंकि वो ऐसे उसको टेंजेंशियली हो रहा है, so this will cause the shear stress. Are you understanding that? This will cause the shear stress. ठीक है, तो अब मुझे उसका एरिया भी चाहिए भाई। ये एरिया ए है, दिस एरिया इज ए, एंड ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट इज एरिया ऑफ बी बी डैश, ये मुझे अगर लिखना है तो आई राइट व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू एरिया ए, दिस इज एरिया ए अपॉन एरिया ऑफ बी बी डैश, ऐसे होगा, क्योंकि इसका एरिया इज मेकिंग सम एंगल, इस तरह से उसके साथ कुछ एंगल कर रहा है वो, ठीक है। दिस एरिया बी बी डैश इज मेकिंग सम एंगल देयर, सो ये होगा साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज एरिया बी बी डैश is equal to a upon sine theta. Please check this, a upon sine theta. Now I want the tensile stress. What will be the tensile stress? Tensile stress is the force which causes the tensile stress. This is F sine theta upon area of tensile stress. Area of tensile stress is nothing but area of BB dash. Now that is equal to F sine theta
divided by area BB dash is A upon sine theta. So that will be nothing but F upon A into sine square theta. F upon A into sine square theta. Is this clear? This is equation 1. अब मुझे चाहिए shear stress. Now I want shear stress. That is equal to shearing force. Shearing force is F cos theta. F cos theta divided by area which causes the same. That is area BB dash, which is the tangential area. तो ये क्या बन जाएगा? This will become F cos theta divided by A upon sine theta. Now that is equal to F upon A sine theta cos theta. This is equation 2. और मुझे चाहिए ratio of tensile stress to shear stress. So what I'll say here, tensile stress to shear stress. Tensile stress to shear stress is equal to, it is given by F upon A sine square theta divided by F upon A sine theta cos theta. This sine F upon A gets cancelled, sine theta also gets cancelled, and that is equal to simply tan theta, sine theta upon cos theta, and that is tan theta. So what is the answer here? The answer is A. The answer is A. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? Hello? Is this okay? All right. So we stop here today. ठीक है? कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द लंच. लंच के बाद मैं मैथ्स का लेक्चर लेने वाला हूँ 11th का. सो 12 पीपल नीड नॉट कम फॉर दैट लेक्चर. अभी हम यहाँ पर फिजिक्स खत्म कर रहे हैं. मैथ्स में HSC बुक से करने वाला हूँ. ठीक है? सो लेट्स स्टॉप.